है, जैसे देखिए ना, फर्स्ट है एरर है -5 और ये एक्चुअल वैल्यू का कितने परसेंट है, 38%। 3 डिवाइडेड बाय 14 करें। एज अ डिपेंडिंग 83 मतलब है जो 9 10 मेंशन तो नहीं है ना क्वेश्चन, एफ टेस्ट लगाना, ठीक है, ठीक है। सर ये हमेशा एक्चुअल में से फोरकास्ट वैल्यूज माइनस करनी पड़ेंगी। सर अपना माइक तो अनम्यूट करें सर। Very warm welcome to all of you. Yes, am I audible? Yes, am I audible? Can you hear my voice? Hello. Yes, sir. Can you hear me, Shafiq? Yes. Clearly heard me. You can clearly listen my voice. Not clear, sir. Clear नहीं है बस. Sir, it's better than yesterday. Okay, it's better than yesterday. It is enough. Today is better than yesterday. Then it is enough. Okay, ji. In last class, first we revised the topic which we had discussed in last class or in yesterday class. सर आपकी वॉइस बहुत स्लो है सर, सुनाई नहीं दे रही. Just 1 minute. Yes. In last class, we had started chapter 17, that is time series and time series analysis and forecasting. Yes. Are you clearly heard my voice now? Yes, sir. Okay.
In last class, we had started time series analysis and forecasting. Basically, time series is a data or sequence of observation over the successive period of time. In data or observation with respect to time is called the time series. And usually any time series follow four types of might be follow one of these four type of pattern. First one is a horizontal pattern, which are horizontal pattern is fluctuated along a single wheel and single value. Mean there is a horizontal pattern is a short term pattern. Second one is the time series maybe follow trend pattern. Trend pattern mean data trend is a long term pattern showing the increasing or decreasing pattern or maybe constant pattern over the period of time. This one is called the trend pattern. And maybe sometime a time series pattern follow the combination of horizontal and trend pattern. The third one is time series might be follow seasonal pattern. Season mean data values repeated every are repeated are behaving with the same pattern, are repeating or following the same pattern with every specific interval of time. Mean in specific time, against the specific time, data showing the same pattern. This pattern is called the seasonal pattern, or you may be called the seasonal effect, clearly visible, or data showing the seasonal effect on time series plot. Such type of pattern is called the seasonal pattern. Example of the seasonal pattern mean, for example, if you plot the umbrella sale, suppose last 5-year data, then umbrella sale is always throughout the year, umbrella sale is always showing the increasing pattern in rainy season, or in for example areas like interiors and umbrella sale showing increasing pattern in, also showing the increasing pattern in summer season. And the last one is time series maybe follow cyclical pattern. Cyclical pattern means it is a long-term variation, long-term fluctuation, mean data fluctuating, showing so first showing some increasing pattern, mean attaining at maximum point, then declining, and then after declining again showing the increasing pattern. Mean cycle is completed. Cycle mean the distance between two rough, or you may be called the distance between two against the two peak is called the cycle. Normally long term जो business cycles होते हैं, long term जो behavior होता है, this one is showing the long-term progress of any company are usually showing the cyclical pattern. And the last one, which we have author of your book is not had not discussed, is the irregular pattern. Irregular pattern actually is also called the non-random pattern. First four pattern: horizontal, trend, seasonal, and cyclical are random pattern. But irregular pattern is the non-random pattern. Mean effect due to natural disasters is always appear in long-term data set. For example, if you consider the demand of any demand of the product from last 20 years, from 2000 to 2020, then we may be seen that demand showing irregular pattern, or you may be called unexpected pattern, from 2005 to 2007. All of us are known that 2005 जो है वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर या केपीके के कुछ एरियाज के अंदर जो है अर्थक्वेक आया था. उस अर्थक्वेक का मतलब एक बड़े लेवल के ऊपर अर्थक्वेक आया था. मोर देन 100,000 पीपल
were died or in this earthquake, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया था जो अर्थक्वेक के बाद उस एरिया के अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ था. फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक आइटम को ले लें, देखिए जो हिली एरियाज होते हैं, माउंटेनियर एरियाज होते हैं, उनमें लोग जो घर बनाते हैं तो उसका जो छत है वो चादर से बनता है. तो उस चादर की जो डिमांड थी, वो जो मतलब गेज के अकॉर्डिंग उस चादर की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर. मीन कि अर्थक्वेक का डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है सेल या डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इसके अलावा आप देखें कि उस एरिया के अंदर शॉर्टेज हुई थी, मतलब फूड शॉर्टेज हुई थी उस एरिया में, वीट शॉर्टेज हुई थी. तो उसके बाद मतलब उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ी है और फिर उसकी डिमांड में भी ह्यूज इम्पैक्ट आया. वॉर होती है किसी एरिया के अंदर, वार का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको सीजनल डाटा के अंदर नजर आएगा. और वार अनएक्सपेक्टेड होती है, इरेगुलर पैटर्न है. बुक में ये डिस्कस नहीं करता इरेगुलर पैटर्न. So time series has 4 types of pattern. Horizontal pattern, trend pattern, seasonal pattern, and cyclical pattern. Or last one is the irregular pattern. Basically, the main objective of studying the time series or analysis of the time series is to forecast the value. First, detect the pattern, discover the pattern among the data value, and on the basis of this discovery or pattern, extrapolate, use the word extrapolate, or you may be called extend the same pattern for future value. This one is called the forecasting. Forecasting is same like as estimation, or forecasting is same like as prediction. Regression की टर्म में हम जिसको estimated value या predicted value कहते थे, उसी को आप टाइम सीरीज के सेंस में फोरकास्ट कहेंगे या फोरकास्टिंग वैल्यू कहेंगे. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस दैट टू फोरकास्ट द वैल्यू. फोरकास्ट हमेशा फ्यूचर के लिए होती है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा और पास्ट डाटा. ओके. The second thing which we have discussed in last class is forecast accuracy. Forecast accuracy measured with the help of mean square error, mean absolute error, or mean absolute percentage error. Normally आप mean square error से compare करते हैं for any forecast method. We have first discussed the very naive method, that is maybe forecast the value against the time period on the basis of most recent value. किसी भी टाइम सीरीज डाटा में जो मतलब सपोज आपको सेकंड टाइम पीरियड की वैल्यू फोरकास्ट करनी है, तो जो उसकी बिल्कुल प्रीवियस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक जो आइकॉन है IBM में, इसकी आज की सेल क्या फोरकास्ट करते हैं, तो सबसे जो सिंपल मेथड है वो ये कि इनकी जो कल की सेल है उसी को आप सेम कर लेंगे, फोरकास्ट कर लेंगे आज भी इनकी ही सेल होगी. या मतलब मोस्टली सपोज वीकली बेसिस पर डाटा गिवन है, आज है सैटरडे, वीकेंड है, तो वीकेंड के अंदर इम्पैक्ट हमेशा डिफरेंट होता है. किसी जगह पे वीकेंड के अंदर इंक्रीजिंग पैटर्न आता है, किसी जगह पे डिक्रीजिंग पैटर्न आता है. तो लास्ट सैटरडे को, जो लास्ट वीकेंड को आइकॉन की सेल हुई थी, हम वही फोरकास्ट करेंगे इस सैटरडे को. दिस वन इज कॉल्ड फोरकास्ट नाइव मेथड. मीन फोरकास्ट द वैल्यू on the basis of very nearest or recent value. Second one is average of the historical data is considered as a forecast value for time period T. These are the first two method. फिर है अगर आपके पास डाटा particularly horizontal pattern show कर रहा है. In case of horizontal pattern we have discussed 3 more method, that is moving average, weighted moving average and exponential smoothing. मैं just आपके सामने वीडियो शेयर करता हूँ. सर आपकी आवाज सही आ रही है पर स्लो है सर. स्लो से क्या मतलब है, क्लियर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? सर मतलब समझ आ रहा है पर आवाज आपकी स्लो आ रही है. अच्छा चले मैं देखता हूँ उसको. अच्छा आप मुझे बताएं कि आपके सामने ये वीडियो विजिबल है? यस सर. यस सर. ये कल की क्लास है हमारी, ठीक. असल में आज की क्लास जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है पास मतलब कल की क्लास से. तो इसको ना हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आएंगे सेक्शन 13.4 पे. I have also uploaded the recording of this class on YouTube. You can easily watch this recording. देखें this one. These are the 4 patterns. Horizontal. These patterns. Okay.
over the year and sustain independent of time. Yes, anyone want to ask any question from last lecture? Yes. Sir, सर ज्योति पहले आप हेलो यस आई कैन हियर यू बोलें आप यस शफीक सर ये शायद पिछली रिकॉर्डिंग में पूछ रहे थे। नहीं वो तो बंद की हुई मैंने यहाँ पे थे यस ज्योति डू यू वांट टू आस्क समथिंग यस सर। सर 14 चैप्टर में से हमें जो आप क्वेश्चन देंगे उसमें इक्वेशन देंगे आप? 17 चैप्टर में से नो सर, 14 चैप्टर में से क्वेश्चन जो आप देंगे उसमें इक्वेशन आप गिवन होगी या फिर हमें फाइंड करनी होगी? लीनियर इक्वेशन गिवन होती है लीनियर इक्वेशन गिवन होती है उसमें क्योंकि हमारा वहाँ पे पोर्शन जो है वो इन्फ्रेंस का पोर्शन है सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन लाइन तो उसमें इक्वेशन गिवन होगी आपको ओके सर 17 चैप्टर में 17.3 और 17.4 ही तो मेन है। हाँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 17.3 और 4 है बाकी तो थ्योरेटिकल है। बाकी थ्योरेटिकल ओके सर। ओके जी forecast accuracy forecast error is measured by taking the difference of actual value and forecast value ये जो forecast accuracy का मतलब वे है ना ये जो आज मैं करवाऊंगा आपको forecast under trend projection ये बिल्कुल सेम है मीन्स के एरर निकालना या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना या फोरकास्ट एरर निकालना वो प्रोसीजर सेम है डिफरेंस आएगा हाउ टू फोरकास्ट द वैल्यू अगेन द टाइम सीरीज डेटा सेट उसके बाद जो फोरकास्ट ये दिस वन फोरकास्ट एरर इज डिफाइंड एज एक्चुअल माइनस फोरकास्ट वो बिल्कुल सेम है सेकंड वीक में है तो सेकंड वीक जो टोटल टाइम पीरियड है वो 6 है लेकिन क्योंकि एज वी आर अनेबल टू कंप्यूट द कंप्यूट 20.8 we are unable to forecast the value against first week that's why means are all divided by 5 वो एक वैल्यू स्किप हो जाएगी हमारी ये क्या आ रहा है नंबर व्हाट इज दिस वैल्यू 20.8 20.8 पॉजिटिव है डिवाइड बाय सर एक मिनट पीछे करें सर एक मिनट सर वो जो आप एवरेज वाला कर रहे थे या सर इधर सर ये जो आपने देखे ना 18 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 17 ये वाला सर ये वाला एवरेज वाला यस क्या पूछना क्या चाह रहे हैं इसमें यस सर इस ये थोड़ा बस रिपीट करें सर देखिए ये है ये जो आपने फोरकास्ट की एवरेज निकाली हुई है ये हम फोरकास्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा सेकंड अप्रोच है ना हमारी या सेकंड मेथड है देखिए फर्स्ट में आपके से पहले कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो वी आर अनेबल वी कैन नॉट फोरकास्ट वी कांट बी फोरकास्ट द वैल्यू अगेंस्ट फर्स्ट टाइम पीरियड तो इसको डैश लगा दिया सेकंड टाइम पीरियड में है तो सेकंड की जो फोरकास्ट सेकंड से पहले एक ही वैल्यू अवेलेबल है 18 वो उसकी फोरकास्ट वैल्यू हो जाएगी थर्ड पे है थर्ड से पहले कितनी वैल्यू अवेलेबल है वी हैव गिवन 2 वैल्यूज अगेंस्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की एवरेज ले लेंगे फोर्थ से पहले कितनी वैल्यूज अवेलेबल है 3 वैल्यूज 18 13 एंड 16 तो ये उसकी फोरकास्ट एर वैल्यू हो जाएगी जब आप आएंगे फिफ्थ नंबर के ऊपर
सॉरी 6 नंबर के ऊपर, तो 6 से पहले हमारे पास वी हैव 5 वैल्यूज अवेलेबल। 18 is the actual value against first data, 13 is the second, and similarly 17 is the actual value against 5 fifth position or fifth value. तो पांचों की एवरेज हमने ले ली है which is equal to 15। कुणाल क्लियर है? यस सर मैं एक्चुअल में सर ये फोरकास्टेड वैल्यू नहीं समझ रहा था, मैं इसको वैल्यू समझ रहा था, तो मैंने कहा कि 14 वाला डिवाइड नहीं हुआ है बस। ठीक है सर, नहीं, ये फोरकास्ट वैल्यू है, और ये ना ये ठीक है सर। 5 वैल्यूज है, ये एक्चुअल डाटा की है। इसके बाद हमने ओके सर, फोरकास्ट एरर निकाला है एक्चुअल में से माइनस करके, इसके बाद ठीक है सर, स्कोर एरर एंड मीन स्क्वायर एरर। थैंक यू। और इसके बाद जो हमने 7th ईयर की फोरकास्ट है वो फर्स्ट 6 की एवरेज को एज फोरकास्ट वैल्यू लिया फॉर 7th। इन एब्सोल्यूट एरर या मीन स्क्वायर एरर या निकालेंगे तो ओके नाउ दिस वन इज 17.3 मूविंग एवरेज। फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास डाटा अवेलेबल है मूविंग एवरेज का। अब मूविंग एवरेज में ना आपको वो मेंशन करेगा। मूविंग एवरेज हैज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज our moving average is distributed in further two type. First one is a simple moving average and the second one is weighted moving average. डिफरेंस इन दोनों में ये है कि वेटेड के केस में आपको वो वेट गिवन करेगा, और सिंपल जो है वो डायरेक्ट। जो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सिंपल का है, मतलब ये जो यहाँ वीडियो में, मतलब कल की क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था ये सिंपल मूविंग एवरेज का है। वेटेड मूविंग एवरेज का क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस वन, फर्स्ट हमने इसको प्लॉट कर लिया। 8th मंथ में 84 एक लाइन के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है। दिस वन इज ए हॉरिजॉन्टल पैटर्न। ओके सर, क्लियर। देखिए ये 3 मंथ्स मूविंग एवरेज। पहले 3 मंथ्स की जो फोरकास्ट वैल्यू, ये आपकी दिस वन इज ए फोरकास्ट वैल्यू, इसको ना हम फोरकास्ट वैल्यू देंगे। 3 मंथ्स मूविंग एवरेज फोरकास्ट। देखिए हमने तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं ये भी। फर्स्ट मेथड ये था कि आप जो मोस्ट रिसेंट है उसको फोरकास्ट लें। सेकंड मेथड इज कि कंसीडर द एवरेज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा द फोरकास्ट। एंड द थर्ड वन, पहले तीनों की जो फोरकास्ट वैल्यू है वी आर अनएबल टू कंप्यूट द फोरकास्ट वैल्यू अगेंस्ट फर्स्ट 3 वीक। 4 वीक पे जब आएंगे, 4th वीक पे, तो 4th वीक पे जो फर्स्ट 3 वीक की एवरेज है वो है फोरकास्ट हो जाएगी 80 + 82 + 84। सम करें इनका डिवाइड बाय 3। इसको मूविंग 82 आ रहा है। यस सर, 82। ये आ गया आपके पास फोरकास्ट वैल्यू फॉर 4 वीक। जब हम 5th वीक पे आएंगे तो इसके मोस्ट रिसेंट 3 वीक कौन से हैं? 2nd, 3rd, 4th, इनकी एवरेज लेनी है। मूव करेंगे ना, मतलब एक 80 को स्किप कर देंगे, 83 को ऐड कर लेंगे, तो 82 + 84 एंड +83 और डिवाइडेड बाय 3। ये नंबर 83 आ रहा है सर। 83 आ गया सर 83 अब 83 सर। 83 एंड द लास्ट वन एवरेज ऑफ फोरकास्ट वैल्यू फॉर 12 मंथ। सर ये जो आपने कहा ये सिंपल है सर। यस, ये सर जो आपने बताया ये सिंपल है। ये रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? हेलो, यस कुणाल, रिपीट करें व्हाट यू आर सेइंग। सर आपने कहा कि एक सिंपल होता है एक वेटेड होता है, ये सिंपल वाला है ना सर? ये सिंपल वाला है, अभी वेटेड। ठीक। 82, 83, 84, 83 आ जाएगा। ठीक है सर next procedure to computing mean square error is same as we discussed in previous section. First 3 has no error value, then no squared value.
Yes. Now we are forecasting under second method, that is weighted moving average. Yes, whiteboard is visible in front of you. यस सर नहीं सर अभी विजिबल नहीं है This one. Now यस सर विजिबल है visible. Okay. Weighted moving average. Weighted average. देखिए वेटेड मूविंग एवरेज तो ना वेट्स की बनवा करेंगे सम ऑफ वेट जो होंगे वो डब्ल्यू आई सपोज इन केस ऑफ 3 months or 3 time period weighted moving average we have given 3 weights for example डब्ल्यू आई ये वेट्स गिवन है 3 months के लिए सपोज 1/4 2/4 and 3/4 1/4 sum of weight should be equal to 1. And first recall the formula for weighted beam, that is x bar of w, which is defined as sum of w into xi over sum of wi. These are this one is the formula for weighted beam. और तो देखें आपके पास एक्सरसाइज में जाते हैं वेटेड बीम का क्वेश्चन लिखा है yes book is visible in front of you yes Yes, sir. this one is the formula for simple and now in case of weighted moving average for example देखिए आपके पास 3 weight is equal to 3 है मतलब number of we want to compute moving average against 3 time period मतलब 3 week है जैसे तो आपके पास डाटा वैल्यूज हैं 17 21 19 वेट्स ये उसने गिवन किए हैं सपोज 1/6 2/6 3/6 फर्स्ट देखिए ना डब्ल्यू एक्स यस first weight is multiplied by first value, second by second, and third weight is multiplied by third value or average आ जाएगी for example सर वेट को 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए कुछ भी हो सकते हैं मैं तो गिवन कर देगा 1/6 के साथ होगा सम फिर भी 1 बन जाएगा अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है बुक विजिबल है ना आपके सामने यस सर विजिबल है देखिए वो ये कह रहा है आपसे कि रेफर अगेन टू द गैसोलीन सेल्स टाइम सीरीज डाटा अवेलेबल in table 17.1 using a weight of 1/2 for most recent observation 1/3 for second most recent observation and 1/6 for third most recent observation compute the 3-week weighted moving average for the time series these are the weights 1/2 for most recent 1/3 for second recent and 1/6 for the third most recent observation compute the weighted moving average और उसके बाद आपने उसका मीन स्क्वायर एरर निकालना है अगेंस्ट डाटा 17.1
this one, table for 17.1, and data given against 12 week. अच्छा, मैं अगर आप कहें तो मैं इसको एक्सेल में करूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व, बेसिक कैलकुलेशन तो एक्सेल में ना करें सर, एक्सेल में ना करें सर, व्हाइट बोर्ड पे करें। व्हाइट बोर्ड, एक्सेल में असल में ना वो एक आप चीज समझ लेते हैं तो उसको कैरी कर लेते हैं। सही है सर, जैसे आपको इजी हो। अच्छा चलिए, मैं ना कुछ कैलकुलेशन आपको बोर्ड पे करवाता हूँ, फिर इसको हम एक्सेल में कर लेंगे, कंप्लीट इसको एक्सेल में कर लेंगे। ठीक है, जो कल का काम है वो हम एक्सेल में करते हैं, नया काम मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ। एक स्टूडेंट ना रिमाइंडर का मैसेज करें सेक्शन ए से, ग्रुप के अंदर की क्लास स्टार्ट हुई और ज्वाइन द क्लास स्टूडेंट्स को, और एक स्टूडेंट सेक्शन बी से ग्रुप में मैसेज करे क्लास के रिमाइंडर का। एट द एंड ऑफ द क्लास में अटेंडेंस मार्क करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8, data given against 12 week. This one, and these are the gasoline prices. मैं इसको just मेंशन कर रहा हूँ वैल्यू से। These are the values: 17, 21, 19, 23, 15, 16, 20, again 18, 22, 20, 15. I have already noted these values from book. And जो given weights हैं, ये तो weights मैंने जनरल लिखे थे, यहाँ आपको जो weights given है, these are the weights, WI, given weights. Given weights are 1/2, 1/3, 1/2 for most recent, second most recent, and this one 1/6. असल में ना आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 मीन 3/6, 1/3 mean 2/6. Yes, 1/6. We can write these weight in this form. Can we write this rate in this form? Have you got it? Now LCM of all three weights are exactly 6. Yes, are you got it this point?
सर इसको रिपीट करें सर। देखिए इनका एलसीएम क्या बनेगा तीनों का? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 236? कुणाल, यस सर। इनका एलसीएम क्या होगा? सर 366। हम्म, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। we can I can clearly heard your voice. I have no issue listening issue or distraction issue or noise issue in your voice. सर ये 1/2 1/3 और 1/6 ये कहाँ से है सर? ये तो Yes, now can you hear my voice? Okay, देखिए इन तीनों का एलसीएम देखिए क्या आ रहा है। 236 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ 6 में कैसे लिखेंगे अगर एलसीएम सेम करें? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये। 1 अपॉन यस सर। डिवाइड किया तो 3/6। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। This one is multiplied by 2 and also divide by 2. 2/2 से मल्टीप्लाई किया। इसका एडवांटेज ये हुआ कि ये तीनों का जो एलसीएम है वो 6 हो गया। तो अब आप ना आपको मतलब यहाँ एलसीएम 6 करने से जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी आपकी। जैसे मैंने यहाँ पे तीनों रखे थे ना, सम ऑफ वेट शुड बी 1 होगा। पहले भी 1 था इसका, अगर आप सम वेट का सम करें पहले भी 1 था, अभी भी ये 1 आएगा। तो 3 वीक वेटेड मूविंग एवरेज, 3 वीक वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक। तो we cannot compute or find weighted average against first 3 time periods. तो starting from 4 time period देखें, consider, अब देखिए फोर्थ में मोस्ट रिसेंट थर्ड होगा और सेकंड मोस्ट रिसेंट कौन सा होगा? सेकंड। और थर्ड मोस्ट रिसेंट होगा फर्स्ट। तो फर्स्ट मोस्ट रिसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे W इंटू एक्स आई ना, मतलब 1/3 1/2 सर 3 से क्यों स्टार्ट किया? 3/6 is multiplied by most recent 19 plus 2/6 is multiplied by second most recent. ये 1/2 1/3 1/6 कहाँ से आया, बस ये बता। ये गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिखा भी है मैंने। These are already given in question. And 1/7 मैंने क्वेश्चन आपके सामने रीड किया ना अभी। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है ना कि 1/2 फॉर मोस्ट रिसेंट, सेकंड मोस्ट रिसेंट, थर्ड मोस्ट रिसेंट। इसको फाइंड कर लें आप। ये देखिए मुझे आंसर बताएं इसका क्या आता है। 6 एलसीएम हो गया ना इन सब का, तो ये सिंपल 57 प्लस 42 प्लस 17 ऐड करें डिवाइडेड बाय 6, बताएं आंसर। सर जो वैल्यू है पहली तो सर वो 17 है ना सर, आपने 19 लिखी है सर। नहीं, मोस्ट रिसेंट वैल्यू। अच्छा वो रिसेंट वैल्यू सही है। रिसेंट ये आएगी ना फोर्थ के केस में। ठीक। दिस वन सेकंड मोस्ट रिसेंट, सेकंड मोस्ट रिसेंट, ठीक, रिसेंट। ये आपकी जो है ये फर्स्ट मोस्ट रिसेंट है। ये मुझे आंसर बताएं इसका। एलसीएम मैंने 6 कर लिया था पहले से ही, ताकि हर दफा आपको एलसीएम 19.3 सर। 19.3। ओके, अब हम आएंगे, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आएंगे। अब फिफ्थ के केस में जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है वो फोर्थ की है, 3/6। इसका वेट देंगे 3/6 इसको, और इसकी वैल्यू है 23 प्लस सेकंड मोस्ट रिसेंट जो है वो थर्ड वैल्यू है, उसको वेट देंगे 2/6
और उसका वेट होगा, वैल्यू है 19, वेट 2/6 एंड वैल्यू इज ये फॉर्मूला है W इंटू एक्स आई, फिर सम कर रहे हैं। एंड जो थर्ड मोस्ट रिसेंट है वो सेकंड वैल्यू है 21, उसको वेट देंगे 1/6, 1/6 ये समझ में नहीं आ रहा, is multiplied by 6। ये सब समझ में नहीं आ रहा। देखिए कल हमने हसनैन जो क्वेश्चन किया था ना, वो था 3 वीक मूविंग एवरेज, उसको सिंपल भी कहते हैं, वहां वेट नहीं है। वेट ना हो तो आप फिफ्थ की कैसे वैल्यू निकालेंगे? सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक क्लियर है बात? जी जी सर। जो हमने कल क्वेश्चन किया था कि जो थर्ड वीक फिफ्थ वीक के अगेंस्ट वैल्यू थी, वो आएगी उसके जो मतलब उससे पहले वाले 3 वीक कंसिडर करेंगे, तो फिफ्थ से पहले 3 वीक ये बनते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी इनको वेट भी देना है। फिफ्थ में मोस्ट रिसेंट बनता है फोर्थ, तो उसको वेट देंगे 3/6, मतलब उस वैल्यू को 3/6 से मल्टीप्लाई करें। फिर सेकंड मोस्ट रिसेंट बनता है 19, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 से। और फर्स्ट जो मोस्ट रिसेंट बनता है या थर्ड मोस्ट रिसेंट बनता है वो 21, तो 21 इज मल्टीप्लाइड बाय 6, यहाँ ना 21 आएगा। यस सर 21 आएगा। 21 है 21। अब देखें इसका एलसीएम 6 आ गया सबका, इसीलिए मैंने पहले एलसीएम सेम कर लिया था। वी कैन मतलब चेंज, वी कैन राइट वेट इन दिस फॉर्म और मे बी राइट इन दिस फॉर्म। अब देखें 6 एलसीएम है सबका, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें 63, 69, 19 को 2 से 21.3 आंसर है सर। 21.3। अच्छा शफीक, अब आप मुझे बताएं नेक्स्ट क्या होगा, फिर मैं इसको एक्सेल पे लेके आता हूँ। 6 के अगेंस्ट मैंने सर इसको 3/6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? इसको सर 18 से 18 से 18 से। 2/6 को वेट तो सेम रहेंगे ना, 23 से 23 से 23 से, वैल्यू ये चेंज सर बाकी से 23 से, और प्लस 1/6 into 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 19। ये आंसर क्या आ रहा है? सर 19.83 19.83। now 83 now we are solving the same question in एक्सेल शीट। ये काम डिफरेंस था, बाकी तो अब वो है जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। दिस वन एक्सेल शीट इज विजिबल। Yes, sir. यस सर। We have data of 12 weeks. This one. These are the values contained into सर one शीट तो ओपन नहीं है सर, ये तो sheet visible नहीं है। आपको एक्सेल शीट नहीं नजर आ रही? नो सर, सिर्फ एक्सेल का वो सर जो फर्स्ट वो आता है वो टेम्पलेट्स वगैरह वो शो हो रहे हैं। आप बताएं नाउ। नो विजिबल। 16, 20, again 18, 22, 20, 15 and 12. These are the values. Now we are computing 3 week. We want to compute 3 week weighted moving average, ठीक। और जो वेट्स आपको गिवन है, विद गिवन वेट्स उसने गिवन किए थे आपको दिस वन 1/2 and
1/3। अगर इनके एलसीएम पहले से सेम हो तो फिर तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। And these weights also written in this form. 1/2 is 3/6. 1/3 is written as 2/6. And last one is same 1/6. ठीक है, तो मैं ये वेट यूज करूंगा। With weights 3/6, 2/6 and 1/6. So we are unable to compute forecast value for against first 3 data set. तो ये है आपके हमारे पास 3 week weighted moving average forecast. Average forecast with these. Okay, 4th week पे हैं, देखें इसको फॉर्मूला इसका लिखते हैं। Most recent value is 19 is multiplied by 3/6 plus second value 21 is multiplied by 2/6 and the third value is this one 17 17 multiplied 1/6 by 1/6। ये भी है प्लस मल्टीप्लाई। सर B3 और इंटीग्रल में यस इसको देखें, ये 19.33, इसको ड्रैग कर देते हैं 21.3, 19.83। ठीक है, ये इसने सो ऑन सारी निकाल दी। फॉर एग्जाम्पल 12 को मैं वेरीफाई करता हूँ, लेकिन 12 उसने कैसे निकाली? 12 में 11th वैल्यू मोस्ट रिसेंट थी B12, उसको मल्टीप्लाई किया 3/6 से, और 10th वैल्यू को मल्टीप्लाई किया ये 10 दिस वन, उसको मल्टीप्लाई किया उसने 2/6 से, और 9th वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 1/6 से। ये हमारे पास आगे forecast value. Yes, all of you got it. How to compute the forecast value under weighted moving average. Then find forecast error. Forecast error. देखिए forecast error start होगा from 4th week. This one, its actual value is 23 minus its forecast value is C5, मतलब 19.33। Actual minus forecast किया, इसको drag कर लिया। These are the forecast error, और फिर हम देंगे scared forecast error। Scared forecast error में इन टर्म्स का स्केयर कर लेते हैं। स्केयर के लिए हम यूज करते हैं पावर ऑफ दिस वन पावर 2। इसको ड्रैग कर लेते हैं और इसका सम कर लेंगे। सम फ्रॉम दिस टू मीन फ्रॉम 4th week to 12 week तक सम कर लिया। These are the scare forecast error। अब मीन स्केयर निकालना है, MSE। MSE is equal to mean this value divided by मतलब sum of scare forecast divided by number of data values। How many values these are? Yes, 9 9। 12 values total थी ना, तो वो 3 तो skip हो गई। These are 9 values। So 13.34 is the mean scale error under 3 week weighted moving average। अच्छा, अब मैं अब आपको दोबारा क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर था ये 8, दिस वन. यस, क्वेश्चन इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Refer to again the gasoline sale time series data in this using the weight 1/2 for most recent, 1/3 for second most recent, 1/6 for third most recent. Compute a 3-week weighted moving average for the time series. ये तो हमने second column, third column बनाया था, 3-week weighted moving average. In part D, B, compute the mean square error for the weighted moving average. ये तो अभी आंसर आया 9.33. Do you prefer this weighted moving average to the unweighted moving average? Remember that mean square for unweighted था 10.22. लेकिन जब हमने weight assign किया ना तो हमारा mean square error कम हो गया. तो yes, we are preferring this one. मैं बोर्ड पे आ गया हूँ. तो mean square error का जो आंसर आया है अंडर weighted moving average वो है पार्ट बी पे, वो है 13.34 है ये. दिस वन इज 13.34. तो अभी हमने कंप्यूट किया 13.34 smaller than by, sorry, greater than by mean square error under unweighted, which is equal to 10 point, उसने गिवन किया बुक में 10.22. बोर्ड विजिबल है ना आपके सामने? This one is mean square unweighted. मीन स्क्वायर एरर अनवेटेड का. जिस तरह देखिए कल हमने कंपैरिजन किया था नाइव मेथड का, मतलब मोस्ट रीसेंट वैल्यू को एज अ फोरकास्ट रख के और हिस्टोरिकल डाटा को एज अ फोरकास्ट रख के. और दिस वन इज द मीन स्क्वायर एरर फॉर अंडरवेटेड. तो जो मतलब द मेथड विच हैज स्मॉलर मीन स्क्वायर एरर is preferable or providing more accurate forecast. This one is against weighted moving average. Mean square error against weighted moving average, and this one is unweighted moving average. Therefore, as smaller किसका हुआ? Unweighted का हुआ. इसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास therefore unweighted moving average method provide minimum variance unweighted moving average method provide better forecast. Provide better forecast. क्योंकि फोरकास्ट एक्यूरेसी का जो मीन स्क्वायर है वो मिनिमम है. प्रोवाइड बेटर फोरकास्ट वैल्यू. अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको जो कल की क्लास के एंड पे, एट द एंड ऑफ द क्लास वी हैव डिस्कस एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड. ठीक है, ये 17.3 में ही है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड. दिस वन इज आल्सो कॉल्ड सिंगल स्मूथिंग. आज हम करेंगे हॉल्ट लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विच इज कॉल्ड अ डबल स्मूथिंग. तकरीबन ये दोनों रिजल्ट्स प्रोसीजर इनके सेम. एक्सपोनेंशियल
सी पार्ट में भी कुछ किया है। सी पार्ट अच्छा देखते हैं इसी को। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। Exponential smoothing. The equation for exponential smoothing is defined as ft plus 1 forecast value for t plus 1 period is equal to alpha. Alpha आपको given हुआ करेगा yt, that is actual value of yt, plus 1 minus alpha into ft. देखिए जब हम t plus 1 को forecast करेंगे तो ft हमें मतलब सेकंड को फोरकास्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट चाहिए होगा, थर्ड को फोरकास्ट कर रहे हैं तो सेकंड की फोरकास्ट वैल्यू चाहिए होगी। और हम जो फर्स्ट की फोरकास्ट है वो हम डाटा में नहीं लिखते, डाटा में हम फर्स्ट की फोरकास्ट को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन टू इनिशिएट द प्रोसेस, टू स्टार्ट द प्रोसेस, वी हैव जस्ट सिंपली अज्यूम कि फोरकास्ट वैल्यू फॉर फर्स्ट डाटा सेट इज सेम एज इट्स एक्चुअल वैल्यू, दिस वन। Forecast value against first data set is same as actual value y1. Yes, are you got it? इसको मैं अब सी पार्ट पे आते हैं पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रॉम लास्ट लेक्चर। देखिए इसी पार्ट ये है कि सपोज यू आर अलाउड टू चूज एनी वेट एज लॉन्ग एज द सम टू 1, could you always find a set of weight that would make the mean square at least as small as the weighted moving average then the unweighted moving average, why or why not? ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन उसने किया है आपसे। ये कहता है कि अगर आपको मसलन फ्री छोड़ा जाए और आप एज पर योर ऑन चॉइसेस वेट चूज करें तो क्या आप कामयाब हो जाएंगे? Could you always find a set of weight that would be the mean square at least as small as the weighted? जितना weighted में आया है, weighted का mean square आ रहा है 13 point something, so answer why or why not? I think this is very difficult to choose the specified weight which provide the mean square error as same as weighted mean square error. इसके पास ना weighted का mean square कम आया है। हम जरा इसको रिजल्ट दोबारा देखें, हमारा तो अनवेटेड का आ रहा है ना, अनवेटेड। मैंने इसको एक्सेल पे दोबारा वेरीफाई करते हैं जिसमें ये हमने नंबर फाइंड किया है। उसके बाद नंबर वेटेड का कम आ रहा है, हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो आंसर अवेलेबल है, इवन नंबर है। ये फोरकास्ट वैल्यू आ गई, प्रेफर द अनवेटेड 11.49 आ रहा है। यस वैल्यूज है हमारे पास। लास्ट वैल्यू आई 17.8।
एक्चुअली ये वैल्यू तुम्हारी सेम आई है, मीन स्क्वायर एरर 4 से लेके 12 तक 9 वैल्यू बनती है। शायद ये ना आंसर में कोई इशू है। देखिए ये 4 कॉस वैल्यू सेम आई है, तो जब हम एक्चुअल से माइनस करने हैं तो मेरा डाटा को वेरीफाई कर लूँ क्यों इशू आ रहा है इसमें। आई थिंक कोई एक आध वैल्यू में ना कहीं शायद इशू हो, इस वजह से ये इशू आ रहा है। 17, 21, 19, 23, 18, 16, 20, 18, 22, 20, 12। ये आपका आंसर ठीक है जी, जो हमने कंप्यूट किया ना, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके, ये देखें इसमें ना, इसमें आंसर लिखा हुआ है सी पार्ट में, यू कुड ऑलवेज फाइंड अ weighted moving average at least as good as the unweighted one. Actually, the unweighted moving average is a special case of the weighting one where the weights are equal. वो ये कहता है कि ये इस तरह डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है कि हम कोई वेट्स अज्यूम करें, क्योंकि ये तो वेट्स के तो बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। तो नॉर्मली हम अनवेटेड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अनवेटेड इटसेल्फ वेटेड ही है। इक्वल वेट्स हो तो वो मतलब ठीक है ना, अगर तीनों के वेट्स हो 1/6 1/6 1/6, तो सम क्या हो गया 1, 1/6 को 3 टाइम ऐड करें तो सम 1 हो गया ना। तो वो कहता है अनवेटेड इज द स्पेशल केस ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज, तो अनवेटेड इज प्रेफरेबल। इज द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल? आपके सामने वीडियो विजिबल है? यस, रिप्लाई करें मुझे। ये पर विजिबल है। देखिए कि ये मेथड हमने जो पढ़ा है, इसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ये आपके पास है डाटा वैल्यूज। मैं क्योंकि मैंने नेक्स्ट पेज पे आया हूँ बोर्ड पे, तो मुझे ये डाटा वैल्यू अगेन लिखने पड़ेंगे। मंथ्स हैं, वी हैव 12 मंथ्स, डाटा ऑफ 12 मंथ्स 50, 52, 53 and 54. 54, 53. ये आपका डाटा सेट आ गया सारा, ठीक है। वैल्यू अब आप आते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में। द इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज डिफाइंड एज ft इज इक्वल टू अल्फा yt प्लस 1 माइनस अल्फा into ft, 4 cost value for ft plus 1 mean 4, this one is ft plus 1, ft plus 1 mean 4 cost value for time period t plus 1, alpha given होगा आपको for the in this case alpha is called the smoothing constant which is equal to 0.2. तो देखें if we substitute t is equal to 1, the result is t plus 1 2, 4 cost value for second period is alpha, y2 sorry y1 t1 पुट किया प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू f1। f1 का मतलब है 4 कॉस वैल्यू फॉर फर्स्ट टाइम पीरियड। पहले टाइम पीरियड की तो कोई 4 कॉस वैल्यू नहीं है, वी आर अनएबल टू 4 कॉस अगेंस्ट फर्स्ट टाइम पीरियड। तो ये जो f1 है ना, हम अज्यूम करेंगे कि ये y1 से मतलब ये t इक्वल टू 1 कैसे है सर? स्टार्ट लिया ना, t की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है, लेकिन जब t की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो सेकंड टाइम पीरियड की 4 कॉस्ट आएगी। फर्स्ट तो हम मतलब फाइंड कर ही नहीं सकते। f1 जो है उसको हम अज्यूम करते हैं कि y1 के इक्वल है, ठीक है। ये फॉर इनिशिएटिव का प्रोसेस, हमारा प्रोसेस शुरू हो सके। इक्वेशन चूंकि f2 की वैल्यू f1 पे बेस कर रही है, तो हम अब f2 क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा अल्फा y1 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू f1 की जगह पे y1, ठीक है।
अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये अल्फा वाई वन कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ वाई वन रह जाता है। और वाई वन की वैल्यू क्या है, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्स्ट टाइम पीरियड इज 80। इसका मतलब है जो सेकंड टाइम पीरियड है उसकी 4, वाई का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, एफ का मतलब होता है फोरकास्टेड वैल्यू। तो फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ सेकंड टाइम पीरियड इज 80, दिस वन। इज इट क्लियर? Now comes to the forecast value for third time period, that is t is 3, sorry t is 2, second mean हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू 2। जब आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, f3 which is equal to alpha y2 plus 1 minus alpha into f2। Is it clear? देखें, यस सर। अल्फा आपके पास है 0.2, y2 आपके पास है, ये गिवन है y2 82, मतलब जिस टाइम पीरियड की आपने फोरकास्ट वैल्यू निकालनी है उसकी एक्चुअल वैल्यू प्लस 1 माइनस अल्फा का मतलब होगा 1 माइनस 0.2, 0.8 हो गया। f2 का मतलब होता है फोरकास्ट वैल्यू फॉर सेकंड टाइम पीरियड, वो जो कि हम पहले निकाल चुके हैं 80। तो जब आप थर्ड टाइम पीरियड पे आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ ये 80 है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से और 1 माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे f2 से। ये सॉल्व करें, 0.2 क्रॉस 82 प्लस 0.8 क्रॉस 80, 80.4, 80.4। 80.4 सर। 0.2 क्रॉस 82, ये क्या आ रहा है 80 84.4 80.4। 80.4। तो ये फोरकास्ट वैल्यू फॉर थर्ड टाइम पीरियड इज 80.4। रेज कर लेते हैं, दिस वन इज 80.4। ठीक, ओके। अब आप आए थर्ड टाइम पीरियड पे, तो टी पुट करेंगे, सॉरी फोर्थ के लिए टी पुट करेंगे 3। देखिए ना, पहले हमने 1 पुट किया तो सेकंड की वैल्यू आई, 2 पुट किया थर्ड की वैल्यू आई। नाउ वी आर पुटिंग t is equal to 3 to find the forecast value for fourth time period f4 which is equal to, देखें अल्फा इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, अल्फा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय वाई टी का मतलब क्या है, t3 पुट करें ना, तो t3 पे y3 की वैल्यू 84, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, प्लस सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, 0.8 और f3 की वैल्यू है 80.4। बहुत ही आसान सा काम है। देखें, जब हम इस टाइम पीरियड की ना, 4 टाइम पीरियड की फोरकास्ट निकाल रहे हैं तो उसकी प्रीवियस एक्चुअल वैल्यू को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, फोरकास्ट को 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, ये रिजल्ट बताएं। 81.1। 81.12 यहाँ आ जाएगा। अब मेरा ख्याल है मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, नो रीड टू राइट how to compute the next value. Simply in case of T5, 0.2 is multiplied by 83 and 0.4 is multiplied by 81.2. Yes, result क्या आएगा? Excuse me sir, Yes, F2 जो आप निकालेंगे एजान बोल रहे हैं। सर उसकी F जी सर, तो सर F1 तो लेकिन है ही नहीं, F2 कैसे फाइंड होगा? असल में ना ये अज्यूम करते हुए, यहाँ देखिए मैंने लेट का वर्ड लिखा है, ये आप प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए ये अज्यूम करते हैं कि जब आपने F2 में F1 रिक्वायर्ड है, F1 को Y1 अज्यूम कर लेते हैं फॉर जस्ट इनिशिएटिंग द प्रोसेस।
अच्छा सर, अज्यूम किया है। अज्यूम, लेकिन ये यहाँ नहीं मेंशन करते। यहाँ पे आप यही लिखते हैं कि नो फोरकास्ट वैल्यू इज अवेलेबल अगेंस्ट द फर्स्ट। ये प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए ये अज्यूम करते हैं कि जो F1 है वो Y1 है। सही है सर। ये नंबर बताएं। सर 81.5। 81.5। ये आगे दिस वन इज 56 के लिए है। 83 को मल्टीप्लाई करें 0.2 से, इसको मल्टीप्लाई करें 81.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 0.8 देन ऐड। तो forecast value for 6 month सर 81.8। 81.8। नेक्स्ट पे हैं 84 is multiplied by 0.2, 81.8 is multiplied by 0.8 then add। ठीक है, प्रोसेस रिपीट हो गया। 2 के बाद 4, 5, 6, okay, do you have any question? Yes. Similarly, find squared error and its mean square error. Our next topic is section 17.4, that is trend projection. Trend projection. Trend projection, if data, time series data follow are showing trend pattern, either in increasing form or in decreasing form. This one, these are the trend pattern in increasing form or maybe in decreasing form. First method is linear trend equation. Simple trend projection regression. Okay, this one is same as simple least square regression line. Least square regression line में आप y is considered as a dependent variable and x is considered as an independent variable. But in case of trend line or trend regression, consider dependent variable same आपका होगा, उसको t से भी represent कर सकते हैं, yt से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको yt as a dependent variable, t of t भी लिखते हैं, दोनों फॉर्म में, दो मर्जी इसमें लिखते हैं। बुक में ना t of t के साथ टर्म लिखी है। b naught is the intercept plus b1 is the slope of independent variable is considered as the time। देखिए रिग्रेशन और टाइम सीरीज में डिफरेंस ये है कि रिग्रेशन में भी आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वेरिएबिलिटी फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम सीरीज एनालिसिस में हमने चूंकि ये देखा है कि जो टाइम है इज द मेजर फैक्टर फॉर वेरिएबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल डाटा सेट। पॉपुलेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, सेल्स टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, डिमांड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, सप्लाई टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। किसी भी फिनोमेना के अंदर चेंज जो मतलब सिग्निफिकेंट अगर उसका फैक्टर कोई है या कॉमन फैक्टर कोई है तो वो टाइम है। तो हम यहाँ टाइम को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे। तो दिस वन इज सेम एज वी डिस्कस इन चैप्टर 14, as we discussed in earlier in chapter 14, that simple linear regression line is also called
trend regression line or linear trend regression on the basis of time is considered as a independent variable, where value of B naught is defined as mean of dependent variable, mean yt पे bar minus b1 into mean of independent variable t bar, and its slope value b1 is the slope, b naught is the intercept. Its slope value is defined as this one, yt minus yt bar yt bar divided into t minus t bar and whole divided by summation t माइनस टी बार स्केयर। ये देखिए बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो आप वहां डिफाइन करते थे, y माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार इज रिप्लेस एज टी बार एंड डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज रिटन एज एक्स टी माइनस टी बार, एंड द रेंज ऑफ टी जो होगी वो फ्रॉम 1 to n, वी हैव n डाटा वैल्यूज, रेंज ऑफ टी इज 1 to n। देन आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास 4 cos वैल्यू आ जाएगी। 4 cos वैल्यू भी आप इसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। इफ यू वांट टू फाइंड द 4 cos एक्यूरेसी देन फाइंड मीन स्क्वायर एरर व्हिच इज डिफाइंड एज summation actual value, that is yt, minus its 4 cos value denoted by ft। असल में ना ये ना इसको यहाँ yt हम इसलिए नहीं लिखते, ये एक्चुअल में 4 cos वैल्यू है, t ऑफ t है, मतलब ये जो फाइनल इसका आंसर आता है ना तो ये 4 cos वैल्यू आती है एट टाइम इज इक्वल टू टी। तो एक्चुअल वैल्यू वो होगी जो गिवन डाटा में है। और द मेन थिंग इज दैट इन केस ऑफ if when we are using a trend line, a regression line, then we are able to compute forecast value against each value of data set। कोई भी skip नहीं होगी, इसी वजह से ये n पे डिवाइड होगा, जितनी नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज होंगी उसी पे ये डिवाइड हो जाएगा। डाटा वैल्यू सपोज 1 up to n, तो ये 1 up to n पे ही डिवाइड हो जाएगा। द सेकेंड मेथड टू फाइंड द ट्रेंड प्रोजेक्शन, ये आपका लास्ट मतलब टॉपिक है related to the numerical problem of this course as well as this chapter, which is called Holt linear। क्वेश्चन में numerical पे आता हूँ दोनों के। Holt linear exponential smoothing। Okay, what about the quiz preparation कर रहे हैं आप quiz की? Yes sir। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में हम देंगे कुछ। और मंडे तक तो पेपर भी चेक हो जाएंगे। हाँ, आज मैंने एक सेक्शन में दे दिए पेपर, होपफुली इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सेक्शन ए में मंडे को दे दूंगा पेपर। Holt linear exponential equation, it is called double smoothing, मतलब based upon two smoothing constant alpha and beta। It is also called double Holt linear exponential smoothing। Exponential smoothing or double smoothing। Based upon two constant, that's why this one is also called double smoothing। Double smoothing means based upon alpha and second constant is beta। Alpha and beta fall between 0 to 1। यही क्वेश्चन में आपको गिवन होगा।
The equation for Holt linear exponential smoothing, same like exponential smoothing, is ft plus k t plus k, which is equal to estimate for time period t denoted by lt into k and estimate for the slope of the regression equation denoted by b, lt plus k into bt, where lt is defined as alpha yt plus 1 minus alpha into lt minus 1 प्लस बी टी माइनस 1। ये फॉर्मूला है आपके पास एल टी का, ठीक है ना। ऊपर जो 4 कॉस की इक्वेशन है वो बेस करती है एल टी एंड बी टी पे। एल टी इज दिस एंड सेकेंड वन बी टी। बी टी इज डिफाइंड एज बीटा इंटू एल टी माइनस 1, बीटा इंटू एल टी माइनस 1, टी माइनस 1 बाद में आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 1 minus beta LT. First equation LT is based upon first smoothing constant, and second equation the estimate of slope is based upon second smoothing constant into BT minus 1। ये दो फॉर्मूले हैं आपके, ये आपको मतलब याद करने हैं LT और BT के। इसी बेस पे K को ना हम नॉर्मली 1 करके सॉल्व करेंगे। K is equal to 1 के लिए। यस सर सर हमें जो फार्मूला गिवन होगा तो वो उसमें ये एक्सप्लेन होगा कि एल टी इसके इक्वल है और बी टी इसके इक्वल है। आपको बस ये बताया जाएगा कि डाटा सेट गिवन है और इस पे हॉट लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से 4 कॉस्ट वैल्यू करें। बस आपको ये हॉट लीनियर इक्वेशन मतलब ज़ाहिर है फार्मूला शीट में ये अवेलेबल होगी, क्वेश्चन में नहीं होगी। हॉट सर ये जो नीचे एल टी इज इक्वल टू ये वाले गिवन होंगे। हाँ ये मतलब फार्मूला शीट में तो ये गिवन होंगे। ओके सर। फार्मूला शीट में हॉट लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की इक्वेशन गिवन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन फर्स्ट फाइंड एलटी एंड बीटी। इसको कहते हैं एस्टिमेट्स ऑफ टाइम पीरियड टी। दीज आर द एस्टिमेट्स ऑफ स्लोप, ठीक है। के जो है ना ये के इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पीरियड अहेड टू द फोरकास्ट। असल में जैसे देखें हमने फोर्थ वैल्यू फोरकास्ट करनी है तो फोर्थ से पहले कितने पीरियड्स होंगे? 3। फोर्थ नंबर पे ना, मतलब 3 के बाद 4 आता है। अगर हमें फोरकास्ट करनी है अगेंस्ट फिफ्थ टाइम पीरियड तो के की वैल्यू मतलब जो है वो मतलब उससे पहले नंबर ऑफ पीरियड 4 हो जाएंगे। तो के को बना हम 1 सब्स्टिट्यूट करके ना क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा आपका। ये रीजन मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। पहले हम आते हैं, दीज आर द टू मेथड टू एनालाइज द टाइम सीरीज एनालिसिस अगेंस्ट ट्रेंड प्रोजेक्शन। ये ट्रेंड प्रोजेक्शन को उसने एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल बाईसाइकिल स्केल है, बाईसाइकिल्स की सेल्स है इन लास्ट डिकेड 10 पीरियड्स में। तो देखिए 10 पीरियड्स में ये बाईसाइकिल चेंज है, कहीं कहीं पे इसमें स्लाइटली शिफ्ट आया है लोअर साइड पे, लेकिन ऑन द एवरेज ये इंक्रीजिंग पैटर्न में शो कर रही है। दिस वन इज बाईसाइकिल सेल, ये इसके अगेंस्ट पे ट्रेंड लाइन बना दिया आपने, ठीक है। दिस वन इज इक्वेशन फॉर ट्रेंड लाइन। ये फिर मैं चीज़ें आपको क्वेश्चन करवाते हैं उसमें करेंगे। अच्छा ये ना आपके पास बुक में ना मिनी टैब वगैरह की कैलकुलेशन अवेलेबल होती है। हम चूँकि एक्सेल या मिनी टैब नहीं कर रहे
तो ये इसको आप स्किप कर देंगे, बाकी मीन्स के हॉट फाइंड करेंगे. दिस वन इज अ क्वेश्चन फॉर मीन्स के हॉट नहीं है. क्वेश्चन पे हम आते हैं. फॉर एग्जांपल 12, 13, ओके जी. 22 नंबर क्वेश्चन ही करते हैं. यस, एक स्टूडेंट रीड करें प्रॉब्लम 22. Yes, anyone want to read? Yes, sir. Yes, if we करें. Sir, the Sanika Children's Fund, the local charity that runs the summer camp for disadvantaged children. The fund's board of directors has been working very hard in recent years to decrease the amount of overhead expenses. A major factor in how charities are rated by independent agencies. The following data show the percentage of the money SCF has raised that was spent on administrative and fundraising expenses for 2016 to 2012. तो सर ये एक्सपेंसेस और पीरियड दिए गए हैं. तो फर्स्ट पार्ट में पूछता है कंस्ट्रक्ट अ टाइम सीरीज प्लॉट. व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न एग्जिस्ट इन द डेटा. पार्ट बी develop the linear trend equation for this time series. In C, forecast the percentage of administrative expenses for 2013. And D में पूछता है कि if SCF can maintain their current trend in reducing the administrative expenses, how long will it take to achieve the level of 5% or less? Explain करें statement को. Explain करूँ सर. सर इसमें मतलब सबसे पहले सर हमें और फार्मूले की मदद से इसका तो हमें वो निकालना होगा. 2013 के लिए हमें एक्सपेक्टेड वो निकालना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी. और इसका हमने वो देखना होगा कि इसका जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न बन रहा है. वो हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि इसका कौन सा पैटर्न है. को एक्सप्लेन करें ना. स्टेटमेंट क्या है? किस तरह सर? मतलब स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें ना. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है. ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करें. एक्सपेंसेस से क्या मतलब है, क्यों इन्होंने सर वो जो है ना why SCF चाहते हैं. rate of expenses. यस सर. यस, एक्सप्लेन करें ना. सर इतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर, ऐसे बाकी थोड़ा आप गाइड कर दें. आप चलो. Yes, any सर other आपकी आवाज नहीं आ रही. okay, any other student want to explain? Okay, basically SCF, सैनिका चिल्ड्रन फंड, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है. मीन लोगों से फंड लेके जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं उन पे डिसएडवांटेज चिल्ड्रन समझते हैं आप. जैसे हमारे यहाँ ऑर्फन्स होते हैं, ऑर्फन हाउसेज होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं जिनका कोई गार्डियन नहीं होता. उन पे बहुत सारे लोग, जैसे ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान में काम करती है ये, और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों से फंड लेते हैं और वो फिर वर्किंग करते हैं सोसाइटीज़ के अंदर फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. तो सिमिलरली सैनिका चिल्ड्रन फंड. यस, यू कैन हेयर मी, यू कैन हर्ड माय वॉइस. यस सर. ओके.
देखें दिस चैरिटी फंड, दिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग run a summer camp for disadvantaged children. The fund board of directors has been working very hard in a recent year to decrease the amount of overhead expenses, a major factor in the how charity are rated by the independent agencies. देखिए कुछ मतलब जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो दुनिया के लेवल पे काम करती हैं, जैसे आपने एमनेस्टी नहीं, आपने जो यूनाइटेड नेशन की है, यूनाइटेड यूएनएचसीआर का नाम सुना है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, किसी भी जो जिन एरियाज के अंदर मतलब वॉर होती है, जैसे अभी आप देखें शाम के अंदर सीरिया में वॉर हुई है, तो सीरिया से लाखों लोग माइग्रेट हुए, या अफगानिस्तान से लोग माइग्रेट करके, जिनको हम रेफ्यूजीज कहते हैं या आप उर्दू में महाजरीन कहते हैं जिनको, तो वो जो रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान में है। तो अब उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है एक कंट्री के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इतनी बड़ी मतलब पॉपुलेशन को जो है वो फैसिलिटेट करे, तो फिर उसमें जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो आती है। ये जैसे अभी इराक और शाम से या यमन से लोग निकले हैं जो वार एरियाज़ हैं, और वो मतलब शेल्टर लेते हैं, नियरेस्ट कंट्रीज़ में भी लेते हैं और दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, जैसे यूरोप में भी लोग गए हैं। तो ये जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी रेटिंग की जाती है दुनिया के लेवल पे। इनकी रेटिंग मतलब का जो मेन फैक्टर है कि ये जो अपने एक्सपेंसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, जितने इनके लोअर एक्सपेंसेस होंगे इतनी इनको हायर रेटिंग मिलेगी, रेटिंग हायर मिलेगी तो ज़ाहिर है फंडिंग ज़्यादा मिलेगी, लोग ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे। किसी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पे आप तभी ट्रस्ट करके पैसे देंगे ना कि ये आपके पैसे को मतलब जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं उस पर्पज़ के लिए, चैरिटी पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो ये चैरिटी पर्पज़ पे ही लगाएं, ना कि ये मतलब अपने एक्सपेंसेस पे लगाएं। तो ये देखें, ये उसने मेंशन किया, द फंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड इन अ रिसेंट ईयर टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्यों वो डिक्रीज करना चाह रहे हैं? अ मेजर फैक्टर इन हाउ द चैरिटीज आर रेटेड बाय द इंडिपेंडेंट एजेंसी, ताकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रेटेड हायर हो by independent agencies. The following data show the percentage of the money Seneca Children Fund has raised that was spent on administrative and the fundraising expenses. ये उनके ना अदर एक्सपेंसेस हैं। 2006 में 13.9% जितना फंड उनको मिला था वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और फंड रेजिंग पे एक्सपेंस किया। 2007 में इन्होंने इसमें रिडक्शन लेके आए हैं और ये 12.2% उन्होंने जो चैरिटी का फंड है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और फंड रेजिंग पे एक्सपेंस किया। एक मतलब देखिए दो तरह की उनकी जो कंजम्पशन है, एक है प्योर चैरिटी पर्पस जो वो चिल्ड्रन के लिए समर कैंप्स या चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और एक है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को वो डिस्करेज करते हैं ताकि उनकी रेटेड हायर हो। अब देखेंगे डाटा गिवन है आपको फ्रॉम 2006 टू 2007। सबसे पहले तो आप देखें कि ये डाटा आपको मतलब पैटर्न क्या शो कर रहा है। फर्स्ट थिंग, यस, बोर्ड इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ मी? No, sir. Yes, sir. It's visible now. Visible. Problem 22. Time period जो given है, this one. Time period from 2006 to 12. and 2012। अच्छा, ये इस फॉर्म में दे देगा आपको टी की वैल्यू खुद से भी, जैसे उसने पीरियड यहाँ आपको ना ऑलरेडी गिवन कर दी, अदरवाइज आप पीरियड खुद से इसके टी के पीरियड असाइन कर लेंगे। तो मे भी आपको ये ईयर मेंशन ना करें, सिर्फ पीरियड दे दे। पीरियड भी यू हैव गिवन टी वैल्यूज मीन फर्स्ट, सेकेंड, मतलब दिस वन इज 2006 इज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट टाइम पीरियड, सेकेंड, थर्ड, और एनुअल डाटा गिवन है 4,
5, 6 and 7, and also given expenses. ये अदर एक्सपेंसेस हैं अदर देन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के SCF के एक्सपेंसेस हैं ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंड रेजिंग एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस गिवन है ओवरऑल परसेंटेज, मतलब जो ओवरऑल एक्सपेंसेस की परसेंटेज गिवन है 13.9% SCF expense on fundraising and administrative issues on 2006, और इसको reduce उन्होंने किया 12.2%. Then in third time period में 10.5%, fourth one 10.4 against fifth one 11.5, 10.0, and the last one is 8.0. So first we plot the data. A part. Years mean time period or expenses. And expenses percentage, लेकिन maximum है 13.9 तक, और we have 7 time period, 7 years. 4, 5, 6, 7. Data is given against 7 time. ये हमने तकरीबन 14 तक जाना है, तो मैं इसमें जो इंटरवल ले रहा हूँ वो 3 का इंटरवल लेता हूँ. 6, 9, 12 and 15. ठीक. Against first time period expenses are 13.9. ये तकरीबन यहाँ बनेगी वैल्यू in between 12 and 15, 13.9. Again second time period expenses are 12.2, 12.2 this one. Against third time period the values are 10.5, 10 against third time period 10.5. Against fourth time period the values are 10.4, 10.5 के बिल्कुल nearest 10.4. Against fifth time period the value is 11.5. यहाँ से यहाँ बनेगी between 10 and 12, 11. Against sixth time period administrative and the fund raising expenses are 10. 10 mean 9 से ऊपर, 10.5 से below. ठीक. And against seventh time period mean in 2012 administrative expenses are 8.5, 9 से below, 8.5. ज्वाइन करते हैं. यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इसके बाद फिर ये रिड्यूस होगा. यस, व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न? ट्रेंड पैटर्न. इस तरह की ना ट्रेंड लाइन बन गई है और डिक्रीजिंग फॉर्म में. ठीक है, डिक्रीजिंग. दिस डाटा सेट शो डिक्रीजिंग ट्रेंड पैटर्न. ट्रेंड पैटर्न मतलब ये किसी एक जो हॉरिजॉन्टल था ना, वो था फ्लक्चुएट होता था अराउंड सिंगल वैल्यू, एंड दिस वन इज नॉट फ्लक्चुएटिंग अलोंग द मीन वैल्यू, फ्लक्चुएटिंग अराउंड मतलब देयर इज अ इंक्रीजिंग, शोइंग द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं. आप ऐसा करें कि
सम फाइंड करें दिस वन। ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम कहेंगे वाई टी, जो गिवन वैल्यूज हैं, ठीक, दीज आर वाई टी। और ये जो टाइम पीरियड है ये टी ऑफ टी है। अगर देखें आपको ये पॉसिबल है कि डाटा सिर्फ ईयर का और एक्सपेंसेस का गिवन हो, तो ईयर्स तो दायरा है, मतलब वो है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम है ना, लेकिन ये टाइम का यूनिट कौन सा है? दिस 2006 इज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट टाइम पीरियड। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो फ्रॉम 2006 है, तो उसको T1 दे देंगे। 2007 इज कंसीडर्ड एज अ सेकंड टाइम पीरियड। यस, वॉइस इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को? डू यू फेसिंग द वॉइस इशू? सर अगर थोड़ी लाउड हो तो ज़्यादा बेहतर है सर। सर एक्सपेंसेस को आपने वाईटी लिखा है और एक्सपेंसेस को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया ना। क्या पूछना चाह रहे पीरियड थे तो आप? टाइम है ना, और टी से शो किया है। एक्सपेंसेस को मैंने वाई टी लिखा है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ठीक है, और हाँ, और जो पीरियड्स है ना उनको टी क्या है, मतलब ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस वन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे रिग्रेशन में आप एक्स कहते थे ना, उसको यहाँ टी कहेंगे। अच्छा, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट, इट इज माइट बी पॉसिबल दैट यू हैव जस्ट गिवन ईयर्स एंड एक्सपेंसेस, तो देन फर्स्ट रिप्रेजेंट द टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, उसको टाइम पीरियड में रिप्रेजेंट करें, जो भी फर्स्ट टाइम पीरियड है। जैसे 2006 फर्स्ट टाइम पीरियड है, दिस वन इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट टाइम पीरियड। 2007 इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू 7। तो इसके बाद सम ऑफ टी निकालते हैं। $28, then sum of yt, सर ये लास्ट वैल्यू 8.5 है या 8 है ये वाई टी में? the last value is 8.5, 8.5। yes, sum देखें इसको क्या है। हम्म, what is sum of yt? 77 hmm? 77 70, डबल 7। 70 exact 77। यस सर। अच्छा, एक स्टूडेंट और भी साथ साथ कैलकुलेशन करें ताकि रिजल्ट वेरीफाई होते जाएंगे। सर ये टाइम को आपने प्लस क्यों किया सर? ये तो सही है सर, ये 77 सही आंसर है। क्या कह रहे हैं? सर ये टाइम को आपने प्लस क्यों किया? ये तो 7 ईयर्स है, तो इसका तो 7 आना चाहिए। नहीं, ये मतलब टी है ना, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, टी ऑफ टी है। मतलब मैं आपको इक्वेशन लिखता हूँ। बी पार्ट जो है हमारे, ए पार्ट में तो जस्ट प्लॉट रिक्वायर्ड था, डेवलप द लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, दिस वन, लीनियर trend equation. Now we are trying to develop linear trend equation. Linear trend equation is defined as this one, P of t, इसको f of t मीन फोरकास्ट वैल्यू भी हम कहते हैं, b नॉट प्लस b1 इंटू टी, ये स्मॉल टी होगा राइट साइड पे, वेयर फर्स्ट फाइंड b1 as b नॉट इज बेस्ड अपॉन b1। ये बिल्कुल जिस तरह रिग्रेशन लाइन पे कैलकुलेशन करते हैं ना, वही सारी कैलकुलेशन। b नॉट, b1 इज डिफाइंड एज समीशन, तो t की रेंज है वो वेरी कर रही है फ्रॉम 1 to
we have 7 time periods from 1 to 7. YT minus YT bar into, जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था वही दोबारा लिखना, स्मॉल टी जो टाइम पीरियड है माइनस स्मॉल टी बार डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस वन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, डिवाइडेड बाय x minus x bar square is written as t minus t bar square. एक्चुअल में ये बिल्कुल रिग्रेशन लाइन है, इसमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं है. The basic difference between trend line and regression line that in case of regression line consider t as a independent variable. T is equal to 1 to n. Okay. Again, first we need t bar. T bar is t का sum करें 28, sum this one, sum of t divided by n, sum of t divided by n, 28 by 4. t bar is 4. Similarly, we are Yes, sir. mean of yt bar. Okay, yt bar summation yt divided by n. Summation yt is 77 11 आएगा. और इसको डिवाइड कर दिया हमने 7 पे, which is equal to 11. Then compute yt minus yt minus yt bar and xt t of t, second t minus t bar, x is considered as a t minus t bar, और इसका स्केयर भी हमें चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए इन दोनों का, और फिर we also need प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. yt इसको देखें ना न्यूमरेटर वैल्यू को, Yes, sir. माइनस yt बार डिवाइडेड बाय xt माइनस xt, सर x को t से रिप्लेस करेंगे. नहीं t ही लिखेंगे इसको, x नहीं लिखेंगे. असल में वो हमारी रिग्रेशन की प्रैक्टिस है, मैं बार बार इसलिए x लिखता हूँ, ये t ही रहेगा, मतलब टाइम एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, t माइनस टी बार, और एक कॉलम हमारा और बन जाएगा, मैं ये इसको रेज करता हूँ, स्क्वायर आ जाएगा. t माइनस टी बार का स्क्वायर आएगा. If you recall this procedure, then you will if you recall the regression procedure, then you see that we have formulating same column in case of simple, if we want to find simple linear regression equation, this one, that is t minus t bar square into product, चलिए ये आपको रिक्वायर्ड होता है, और ये yt minus yt bar. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट वैल्यू ऑफ yt इज 13.9 और t bar yt bar is 11, 11. तो माइनस 11 किया 2.9. Okay, similarly t minus t bar, first value of t is 1, its mean is 4, and this number is minus 3. -3. Yes. Minus 3 is multiplied by 2.9. Square of minus 3 plus 9. Multiply करें,
सर इनकी मल्टीप्लिकेशन -8.7 8.7. Okay, next one. Yt minus yt bar. 12.2 minus 11. 1.2. 2 minus 4 minus 2. Minus 2 का स्क्वायर 4. इनको मल्टीप्लाई करें 2.4 2.4. 10.5 minus 11. तो ये नेगेटिव. यस सर Minus 0.5. This one is -1. इनको मल्टीप्लाई किया तो ये +0.5 और स्क्वायर ऑफ -1 इज. मैं ये सारे कॉलम इकट्ठे बना रहा हूँ कि एज अंडर दिस असम्पशन की. सर ये 3 स्क्वायर कहाँ से आया? t माइनस t ये इसका स्क्वायर है t माइनस टी बार का, इसका स्क्वायर लिया सर. ठीक है सर, ठीक है सर. दिस वन इज yt minus yt bar. 10.4 minus 11.6. 11 यस सर 4 minus 4 0. Product is 0 and this one Yes, is sir. also 0. 11.5 0.5 यस सर and t minus t bar. T is 5 minus 4 1. Product is also 1. Product is also 1 or square is also. Product is 0.5. यस सर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 0.5 ही आएगा दिस वन इज 0.5 और ये टर्म आ गई 1. ओके 10 माइनस 11 1 माइनस में 6 माइनस 4 2. प्रोडक्ट किया तो -2 और -1 का स्क्वायर अगेन 1. लास्ट वन 8.5 माइनस 11 अरे 2 का स्क्वायर करना होगा 2.5 नेगेटिव 7 माइनस 4 3. इनको मल्टीप्लाई करें. अच्छा ये 2 का स्क्वायर है सही. 7.5 यस सर वो 2 का आएगा दिस वन इज अ 4. ये है ना t माइनस t बार इसका स्क्वायर. ओके यस सर ये मल्टीप्लाई करें 7.5 नेगेटिव में यस सर 7.5 और ये स्क्वायर आ गया 9. Nine. तो देखें आप पहले फॉर्मूले को समझें. ये b1 है ना, ऊपर आपको मतलब न्यूमरेटर में प्रोडक्ट का सम चाहिए. वी नीड सम ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड इन डिनोमिनेटर वी नीड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस. not square Sum of the square of this term. Okay. Sum of t minus t bar और इसका स्क्वायर. Similarly, sum ये आपको एक सम रिक्वायर्ड है. Sum of t minus y minus sum of y minus yt bar. ये भी t है yt minus yt bar into t minus t bar और डिवाइडेड बाय ये सारा फिर इसका सम करें. ये नेगेटिव में आएगा सम. -19.3 ये दो वैल्यू पॉजिटिव में बाकी सब नेगेटिव में. तो पहले पे -19. नेगेटिव वाली ऐड कर लें, इसमें से ये माइनस कर लें. ठीक है 19.3 19.3. Now this one is 19.3.
सर 17.4 आ रहा है नेगेटिव का सर। Yes, screen is visible in front of you. Is the whiteboard visible in front of you? Yes, sir. Visible. Sum of the product is 19.3 negative में, and sum of t minus t bars is 28. इसको माइनस करें, सिंपली हमने b1 कंप्यूट करनी है। यस, 0.7. 0 point देखें, in first part we have seen that the given data set showing are exhibiting decreasing trend pattern, then b1 should be negative. ठीक है, b1, the sign of b1 है, is representing the direction of trend. I mean, in case of decreasing direction, sign of b1 is negative, and in case of increasing direction, sign of b1 is positive. मतलब ये on the average change है ना, स्लोप जिसको हम कहते हैं। रिग्रेशन लाइन में हम b1 को स्लोप कहते हैं ना, तो यहाँ पे भी स्लोप है। सिमिलरली b नॉट, मतलब पैटर्न की वेरिफिकेशन यहाँ से भी हो सकती है। पैटर्न असल में वही पैटर्न से आया ना, डाटा वैल्यूज जो हैं वो यस सर। डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव होंगे। Yes, you can also verify the pattern from the sign of b1. b naught is yt bar minus b1 into t bar. Yt bar is 11 minus negative 0.7 into t bar. T bar is 4. Final answer. 13.8. 18.8. 13 sir. 13.8. 13 point. Yes sir. Okay. This one is 13.8. Equation आपकी जो बनेगी वो ये बन जाएगी, मतलब to find the forecast value, b naught is 13.8 linear trend equation minus 0.7 b1 into t. ठीक, अब अगर आपको वैल्यूज फोरकास्ट करनी पड़े तो with the help of this equation we can forecast on the value against each time period. Forecast under linear trend. पहले आपने linear trend से equation निकाल ली. Now we are forecasting the given expenses forecast under linear trend, linear equation under trend equation. Trend. थोड़ा व्हाइट बोर्ड को नीचे तो करें सर, एक चीज समझ नहीं आई। Yes. This one is a formula for B1. B minus T bar square into this, and this one is the formula for B naught, and B naught is 13.8.
डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर बी नॉट की जो वैल्यू है वो 13.8 आई है। 13.8. This one. Forecast under trend deviation. देखिए फोरकास्ट वैल्यू कैसे होगी। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है 13.8। तो फर्स्ट टाइम पीरियड है हमारा 2006, उसको हमने टी अलॉट किया 1, 13.8 माइनस 0.7, इसकी जो फोरकास्ट ये एफ टी है एक्चुअली, दिस वन इज फोरकास्ट वैल्यू एफ टी, इसमें टी की जगह पे 1 पुट करना। तो रिजल्ट इज 13.1 आएगा 13.1 1 forecast value for second time period 13.8 minus 0.7. We have allotted t is equal to 2, or assign is appropriate word. T is equal to 2 again second time period. So 12.4 point this one 0.7 is into multiplied 2 by 2, so 13.8 add हो जाएगा। Yes, result देखें 12.4 4. Similarly, for third time period, t is considered as 3, which is equal to 11.7 11.7। 7 जीरो पुट किया तो ये 13.8 है। जीरो नहीं होगा ना, 5 पुट होगा, 4 5 आएगा 4 आएगा 4 पुट किया तो देखें वैल्यू क्या आती है। 11 आएगा सर एग्जैक्टली 11 आ रहा है। यस सर 0.7 का गैप चल रहा है ना। यस सर दिस वन इज 10.3 10.3 एंड द लास्ट वन इज पर ईयर जो चेंज आ रहा है वो 0.7 का चेंज आ रहा है, वो डिक्रीजिंग है। 9 पॉइंट ऑन द एवरेज डिक्रीजिंग है। 9.6 9 पॉइंट ऑन द एवरेज डिक्रीज ये था ना 0.7, तो वो शो हो रहा है आपको हर ईयर में। These are the forecast values. With the help of forecast values, we can easily compute forecast error. Error is defined as actual minus forecast. साथ ही एरर का स्केयर ले लें ताकि मीन्स के एरर कंप्यूट कर लें। एक्चुअल माइनस, बल्कि डायरेक्ट ही स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल वैल्यू फर्स्ट जो है वो है 13.9 माइनस इसकी फोरकास्ट वैल्यू है 13.1, इनका डिफरेंस लें और स्केयर कर लें। दिस वन 0.64 0.7 आ गया ना, 0.7 का स्केयर किया 0.8 आएगा सर 9 में से 1 माइनस किया तो ठीक है 0.8 का स्केयर किया तो 64 ओके। सेकंड वैल्यू है हमारे पास 12.2, 12.2 में से 12.4 माइनस किया माइनस 0.4, इसका स्केयर कर लिया डायरेक्ट -0.0 0.16 होगा। सर तीसरा मतलब 12.2 और 12, अच्छा हाँ ठीक है 0.2 आया है, ठीक है। यस सर तो स्केयर क्या आ रहा है 0.2 का? 0.04 आएगा 0.04 ओके। 11.7 का मतलब है 10.4, 10.4 माइनस 11.7 सर 1.69 स्क्वायर स्केयर लेके यस सर
नेक्स्ट वैल्यू इज 11.5 और ये 0.5 का स्केयर किया तो 0.25. 0.25, 0.3 का स्केयर किया 0.09. और लास्ट है 8.5 में से 9.6 माइनस करें 1.1 स्केयर करें इसका किससे सर? लास्ट वैल्यू 8.5 माइनस 9.6 किया वैल्यू क्या आ रही है 1.21. कॉलम का सम किया 3.92. 3.92 92. Yes sir. 3.92 मीन्स क्या हो जाएगा 3.92 and these are we are computing forecast value against all 7 data values. Yes sir. तो ये सारा नंबर 0.56. 0.5 ओके सी पार्ट अभी मैं मीन्स के एरर क्वेश्चन में डिमांड नहीं थी मैंने आपको जस्ट बता दिया कि हाउ टू कंप्यूट द मीन्स के एरर क्वेश्चन की नहीं थी डिमांड सी पार्ट है फोरकास्ट परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2013 सर इसकी वैल्यू तो इक्वेशन से फाइंड होगी ना क्वेश्चन में इसकी वैल्यू forecasted administrative forecasted 2013 administrative expenses put t is equal to ठीक है 2012 तक हम पुट कर रहे हैं 7 तो 13 के लिए पुट करेंगे 8 ठीक है put t is equal to 8 in given equation $13.8 minus 0.7 और t की जगह पर हमने पुट किया 8 रिजल्ट 8.2. 8.2 ठीक हो डी पार्ट क्या है कि SCF कैन मेंटेन देयर करंट ट्रेंड मतलब ये रिड्यूसिंग ट्रेंड है maintain their reducing trend in the reducing administrative expenses how long will it take to take them to achieve a level of 5% or less how long SCF will achieve level of 5% or less yes ठीक है सर ये 8.2 जो है ये परसेंट है ना 8.2 मतलब वो जो एक्सपेंसेस हैं हाँ परसेंट मतलब 8 जो आप फोरकास्ट कर रहे हैं ना फोरकास्ट एक्सपेंसेस हैं 2003 के वो ये यस सर पैटर्न को अगर फॉलो 8.2%. तो ये 8.2% है
how long SCF Seneca Children Fund achieve level of 5% of less expenses, percentage of expenses. इसके लिए ये है कि देखिए आप ना टाइम निकालना है आपको, FT को आप रखें या TT को रखें, TT को 5 रखें 5% और 13.8 माइनस 0.7 इंटू टी, टाइम की क्या वैल्यू होगी, यहाँ से टाइम निकालें, ये 0.7 ऐड हो जाएगा, 0.7 इंटू टी इज इक्वल टू 13.8 minus 5 which is equal to 7.2. तो टी की वैल्यू आएगी 7.2. हाउ लॉन्ग ना टाइम रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय 0.7. अरे 8.8 आएगा सर, 13.8 minus 5. ठीक है, दिस वन इज 8.8. इसको डिवाइड करें आप, डिवाइड 8.8 बाय 0.7, 12.57. 8.8 divided by 0.7. देखिए क्या आती है 12.5, 12.57. 12.57. ठीक, 12.57 मीन के तकरीबन एटलीस्ट 13 years रिक्वायर्ड. Yes, sir. At least 13 years. 13 years का मतलब ये है कि that is up to T13 कब आएगा, against which year? 2026 6 पे. इस तरह आएगा ना. लेकिन आप 2013 पे कर रहे हैं 8 में 13 ऐड करें कितना हुआ 5, तो 2013 Yes, में sir. 5 ऐड करें तो 2018 होगा ना, 18 आएगा सर. 18 आ गया ना. आप सीक्वेंस चले ना, यहाँ से सीक्वेंस चल लें. Yes, sir. अगर आप गिवन डाटा में आए, दिस वन 7 आ रहा है 2012 के अगेंस्ट, तो 2013 के अगेंस्ट क्या आएगा 8, 8 आएगा सर. 14 के अगेंस्ट क्या आएगा 9. 9, तो सो ऑन 10, 11, 12, 13. 13 आएगा 14, 15, 16, 17, 18. 18. Yes, sir. 18 के अगेंस्ट. तो हाउ लॉन्ग मीन एटलीस्ट 7 years. मतलब शुरू से चलें तो 13 years रिक्वायर्ड है कि वो 5%, क्योंकि देखिए ना इनिशियली वो 13%, ऑलमोस्ट 14% के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कर रहे थे, कि वो 5% तक आ जाएं उसके लिए 13 years रिक्वायर्ड है. अप टू 2018 SCF will achieve target of 5% or less expense. Target of
5% or less expenses. Is it clear? तो मतलब 13 ईयर्स जो है मतलब ये शुरू से बता रहे हैं कि हाँ जी. सबसे डेटा में अवेलेबल है. Okay जी, we have left one numerical problem related to the last topic, that is hot linear exponential smoothing. This is also called the double smoothing. The first chapter कौन सा है? Chapter white? जी. तो पहले वाला जो है ना उसको बताइए. Hot linear exponential smoothing. Exponential. सर ब्रेक दें सर, कंटिन्यू क्लास चल रही है सर, 2.5 घंटे हो गए सर. ठीक है, ब्रेक कर लें आप. 10 मिनट्स की ब्रेक करें. सर आफ्टर 10 मिनट. सर एंड कब करेंगे सर? 5 PM पे. ठीक है At तो ठीक है सर, फिर आप कर लें क्लास लेने सर. we shall end this class at 5 o'clock. सर तो वैसे भी आधा घंटा रहता है तो जारी करें सर. कर लें, आप ब्रेक कर लें, थोड़े से फ्रेश भी हो जाएं. ठीक. सर फिर ब्रेक 5:15 तक चली जाएगी. नहीं, 5 o'clock पे एंड कर दें. ओके सर.
कहीं
Yes, sir. Before taking the break, we have started. Uh, try to start the problem. Try to solve the problem related to the hot linear exponential smoothing. It is also called the double smoothing. This one, exponential smoothing, is based upon t plus k forecast value k periods ahead is equal to L of t plus k time b of t. L of t are the estimates of time, and b of t are the estimates of slopes. First we compute LT and BT, and then find forecast value. For example, alpha and beta are given. Suppose this one. Have to have a share of the benefits. So I have. Okay, from exercise only solve those questions which are related to exponential smoothing as well as trend projection. The problem related to the non-linear trend equation like quadratic equation or exponential equation are problem solved with the help of Minitab or Excel. No need to solve such type of problem. No need to solve the problem related to non-linear equation. For example, this one, use Minitab or Excel, develop the quadratic trend equation. Okay, quadratic trend equation is not in as per your is not in your syllabus. Yes, sir. Only solve the trend projection or problem related to the hot linear exponential smoothing. For example, this one, question number 17. We have given these data set, time, 5 values of time, 6, 11, 9, and 14. Question number 18. Refer to the time series in exercise 17. Use the hot linear exponential smoothing method against alpha 0.3, beta 0.4 to develop a forecast against t is equal to 6. To develop, main objective of this question is to develop the forecast against t is equal to 6. Question number 18. Use the data from exercise 17. Time. We have 5 time periods. 2, 3, 4, and 5. Fine. Yes, sir. Corresponding values. Values mean yt. 6, 11, 9, 14, and 15. Okay. LT. LT is defined as alpha yt plus 1 minus alpha into LT minus 1. For example, if you substitute starting from t is equal to 2, लेकिन t1 पे ना ये satisfy नहीं होगा. t1 पे तो ये not आ जाएगा ना. तो the value of L naught is not available in the data set. So we are unable to compute. So we are starting from t2. Mean just assume for initiate the process. Assume that मैंने पहले भी आपको ये गिवन कर दिया था. Assume that L1 is equal to Y1. ये इसकी बेसिक कंडीशन. जैसे हम इन केस ऑफ सिंगल स्मूथिंग कर रहे थे कि जो फर्स्ट फोरकास्ट वैल्यू थी वो हमने अज्यूम की थी y1 है. लिख नहीं रहे थे लेकिन उसको मेंशन कर रहे थे. यहाँ पे आप लिखेंगे भी. तो फर्स्ट वी एस्टिमेट LT एंड
second estimate BT. देखें T को 2 पुट करें, T L फर्स्ट जो वैल्यू है L1 की वो आप अज्यूम करेंगे Y1. Y1 क्या है 6. सिमिलरली B की भी पहली वैल्यू हम अज्यूम करेंगे विच इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1. ये फॉर इनिशिएट द प्रोसेस. ठीक, तो Y2 माइनस Y1 मीन 11 माइनस 6, मतलब सेकंड ओरिजिनल वैल्यू 11, फर्स्ट ओरिजिनल वैल्यू 6 विच इज इक्वल टू 5. ओके, अब आए आप सेकंड एस्टिमेट पे. When we substitute L is equal to T is equal to 2, then L2 is defined as alpha Y2 plus 1 minus alpha into L1 आ जाएगा ना, 2 minus 1 L1. देखिए अल्फा और बीटा आपको गिवन की क्वेश्चन में गिवन है आपको कि अल्फा इज कंसिडर एज 0.3 एंड बीटा, मतलब ये स्मूथिंग कांस्टेंट है आपको अवेलेबल होंगे क्वेश्चन, एंड बीटा इज कंसिडर एज 0.5. 0.5. बीटा इज कंसिडर एज 0.5. ओके, देखिए अल्फा y2 अल्फा 0.3 और y2 11 प्लस 1 माइनस अल्फा 0.7 हो गया, 1 माइनस 0.3 इंटू L1. देखिए ना सेकेंड L2 के लिए आपको L1 रिक्वायर्ड था, इसलिए L1 को हमने अज्यूम कर लिया विच इज इक्वल टू Y1. Y1 है 6, तो यहाँ 6 पुट हो जाएगा, यहाँ से निकालें. एंड इक्वेशन फॉर BT भी साथ लिखते हैं. 7.5. ये आ गया 7.5. दोबारा चेक कर लें, मिस्टेक ना हो. असल में एक वैल्यू में भी मिस्टेक होगी तो वो फिर कैरी ऑन होगी. द फॉलोइंग प्रोसीजर, यस, बीटा इंटू LT माइनस 1 LT. असल में ये LT की मैंने इक्वेशन ठीक नहीं लिखी, आप उसको दोबारा देखें. LT की इक्वेशन ये है अल्फा YT प्लस 1 माइनस अल्फा, इसके साथ प्लस भी आता है, BT माइनस 1 भी आता है, BT माइनस 1 जो मैंने ऊपर लिखी थी. यहाँ पे जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया जैसे यहाँ देखें, ये LT की पूरी इक्वेशन ये बनती है अल्फा YT 1 माइनस अल्फा LT माइनस 1 प्लस BT माइनस 1. तो ये हम स्किप कर रहे थे, also add BT माइनस 1. ये टर्म आपका इस तरह से आएगी अल्फा YT प्लस 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे L1 और BT माइनस 1 B1 भी आएगा, L1 प्लस B1 ऐसे आएगी. ठीक, अब इसकी वैल्यू हमें पता है ये दोबारा से तो B1 ना आप पहले निकालिए. ये BT की जो इक्वेशन है वो डिफाइन हमने की है बीटा इंटू LT माइनस LT माइनस 1 प्लस 1 माइनस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा इंटू BT माइनस 1.
तो इसको भी स्टार्ट T2 से लेंगे और जो B1 है ना वो आप अज्यूम करेंगे, ठीक। B1 को ये अज्यूम करेंगे जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है y2 minus y1. y2 minus y1 is this one 11 minus 6 which is equal to 5. अब देखिए, अब आप पहले L2 निकालें फिर B2 पे हैं। अब ये मैं L2 की वैल्यू पुट करता हूँ, अल्फा 0.3। ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, LT और BT की, और स्टार्ट होगा T2 से। T2 पुट किया तो ये आपका L2 बन गया, क्रॉस y2, सेकेंड वैल्यू ऑफ y इज 11 प्लस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.3 L1 ये है 6 प्लस B1। देखिए ये B1 अभी मैंने एज्यूम किया, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। बताएंगे वैल्यू सारी। L2 11 को मल्टीप्लाई करें 0.7 से और 11 मल्टीप्लाई होगा 0.3 से, तो ये 11 ही आ जाएगा। L2 is 11. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। यार आपके पीछे शोर आ रहा है, वॉइस है। यस यस सर, असल में मैं पूछ रहा था क्लास कब तक चलेगी लाइव? अभी 5 PM तक होगी, 10 मिनट्स मोर। 5 PM तक। थैंक यू सर। ओके, L2। अब आप आए, देखिए T2 पुट करें तो कंप्यूट B2। B1 तो हमने अज्यूम कर लिया y2 माइनस y1, और L1 अज्यूम किया y1। अब B2 के लिए T2 पुट किया तो बीटा, जब हम T की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो दिस नंबर इज, बाय पुटिंग बीटा, तो L2 माइनस L1 प्लस 1 माइनस बीटा इंटू B2 माइनस 1 B1। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए बीटा उसने हमें गिवन किया है 0.5, L2 अभी हमने निकाला है 11, L1 दिस वन 6 प्लस 1 minus beta which is equal to beta again 0.5, and B1, the value of B1 is the value of B1 is ये जो है ये वैल्यू 5, y2 minus y1, तो B2 आ जाएगा आपके पास। ये बिल्कुल सीक्वेंस से निकलेगी, पहले L2 B2, अब L3 B3। ये वैल्यू बताएं। सर 5 है। 5 आ रहा है, 11 यस सर। 5 और 5, ठीक है 5 आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं हम, B2 is 5। Okay. Now we find value of L at t is equal to 3. देखिए यहाँ इक्वेशन में पुट करें L3 which is equal to alpha by 3, ये गिवन इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू LT माइनस 1। LT माइनस 1 जो है ये है 2 प्लस BT माइनस 1 विच इज आल्सो इक्वल टू 2। अब आप वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू है 0.5 और y3 है हमारे पास अल्फा 0.3 है। अल्फा 0.3 है सर, अल्फा इज 0.3 और y3 डाटा सेट में 9। 1 minus alpha mean 1 minus 0.3, L2 is 11 प्लस B2, ये हमने कंप्यूट किया B2 इज इक्वल टू 5, यहाँ 5 लिख देंगे, B2 is 5। कंप्यूट करें
सारा रिजल्ट कंप्यूट 6.9. 6.9 ओके जी। L3 इसके साथ ही B3 भी निकालते हैं। देखें T को 3 पुट करते हैं B की इक्वेशन में, इसको हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल B3 इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। बीटा when we substitute B is equal to 3, this one is L3 minus L2 plus 1 minus beta into E2 आ जाएगी। बीटा is to find B3, beta 0.5, L3 this one 6.9 minus L2 11 plus 1 minus beta 1 minus 0.5 B2 is 5। ये सारा रिजल्ट कंप्यूट करें। Sir, 0.45. पॉइंट ये आपने L3 की जो वैल्यू है ये देखें सही निकाली है 6.9। इशू तो नहीं इसमें। ठीक है 0.5 2.5 6.9 और 11। अच्छा ये क्या आ रहा है आपके पास B3 आंसर बताएं B3 का। सर ये 13.9 आती है सर। ये जो L3 है यस सर। हाँ ये नेगेटिव वैसे में है, ये आ रहा है 13.9। यस सर 13.9। 13.9 अब यहाँ पे 13.9 कर देते हैं। ये 6.9 नहीं है बल्कि दिस वन इज 13.9 प्लस 11 माइनस 11 और दिस आंसर बताएं। 2.9 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ 2.5 5 आ जाएगा B3 3.95 3 पॉइंट समथिंग आएगा 95। 3.95 ओके जी। राइट दीज रिजल्ट्स इन इक्वेशन इन टेबल L3 13.9 and B3 3.95. So we have left only two values L4 and B4. L4 के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं T की वैल्यू 4। देखें इसी इक्वेशन इसी पैटर्न पे L4 is alpha Y4 plus 1 minus alpha into this one L4 plus B L3 हो जाएगा T minus 1 है ना L3 और माइनस B3 प्लस B3 इक्वेशन में पुट करें वैल्यू अल्फा 0.3 जो Y4 है गिवन डाटा से Y की वैल्यू है वो है Y4 is 14 plus 1 minus alpha is 0.3 L3 is 13.9
and B3 which is equal to 3.95. इसको कैलकुलेट करें। मैं यहाँ पे T को 4 पुट करके B3 का क्वेश्चन Sir, 17.7. 17.7। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे B4 is equal to beta, this one L4 minus L1, sorry, T minus 1, L3 positive 1 minus beta into B4 minus 1, 3. Substitute the results. Beta is 0.5 and L4 17.7. Fourth value of T estimate minus L3. Third value is 13.9 plus 1 minus beta, 1 minus 0.5 into B3 which is equal to 3.95. Calculate these results. 3.95. Then you will get the value of B4. Yes. B4 3.88. 0.88. Okay. The last one, fifth value of T is equal to 5, L5 which is equal to alpha Y5 plus 1 minus alpha into L5 5 minus 1 4 plus B5 minus 1 B4. Value substitute करें. Alpha is 0.3 and the Y5 is 15. The given value plus 1 minus alpha, that is 1 minus 0.5 L4. L4 is 17.7. Fourth level of time plus fourth level of slope is 3.88. Yes, what is the answer? Value of L5? 19.6. 19.6. In a similar way, we shall compute a fifth level of slope, that is T is equal to 5. B5 is mean beta, L4 minus L3 plus 1 minus beta. Beta is this one into B4. Substitute the results. Beta 0.5. Fourth level is 19.6 and third level of L is 17.7 plus given equation में put करेंगे. इसके बाद आपने जैसे देखे ना, this one is a fourth level. B5 है ना, तो ये स्टेट कोड में प्लस 1 में यहाँ आएगा L5 LT minus LT minus 1 है और this one is a L4. वैल्यू हमने सही पुट की थी, इक्वेशन नंबरिंग नहीं ठीक की थी. L5 is 19.6 and L4 is 17.7. Similarly 1 minus 0.5, 1 minus 0.5 और B4 is 3.88. 3.88. Yes, answer of B5. 2.89, sir.
2.89. ओके जी, मैं ये रिजल्ट लिखता हूँ 17.7 3.88 17.7 B4 is 3. सर अटेंडेंस कब लेंगे सर आप? नमाज का टाइम हो गया। Just give me one. ये सर नमाज का टाइम। 5:15 पे नमाज है, वेट करें मुझे। सर आप मंडे को मिलाओगे ना? मंडे की क्लास होगी 19.6 and 2.84 89 है 84 है शफीक। Sir, 8.9. अच्छा 8 19.6 and 2.89 19.6 2.89 ओके जी। BT NLT, इसके बाद आप 4 कॉस्ट करते हैं FT की वैल्यू, तो K को 1 रखेंगे, ठीक। देखिए K 1 रखेंगे तो L1 F1 क्या होगा, T1 पुट किया, ठीक। तो ये L1 प्लस F1 L1 प्लस F1 इन दोनों को ऐड कर लें 6 + 5 11 ओके। F2 T2 पुट किया तो L2 प्लस B2 L2 प्लस B2 11 + 5 16 F3 L3 प्लस B3 13.4 प्लस वैल्यू लिखे तो 13.4 प्लस 3.95 विच इज इक्वल टू ऐड करें 17.85. 17.85 So 13.9. दोबारा देखें क्या बनता है 17.35 बनेगा ना? 85 बनेगा सर। 13.9 है सर। अच्छा ये 13.9 है, ठीक है। यस सर। 17.85 ओके। सिमिलरली F4 ऐड कर लें इन दोनों नंबर को L4 17.7 प्लस 3.88 सम इज F5 P5 पुट किया, देखिए इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, K को 1 रखा ना तो T4 + 1 5 ये क्या आ रहा है 21.58 21.58 and the last value is 19.6 plus 2.89 which is equal to 22.49 20 2.49 2.49 ठीक। ये आपकी 4 कॉस्ट वैल्यू होगी and the subsequent procedure or remaining procedure to compute forecast error and its mean square error is same as we already discussed. It is your job to find forecast error and then taking its square to get the mean square forecast error for accuracy measure of this data set. Later on I will share the recording of this lecture. You will see access the recording of this lecture. सर अटेंडेंस ले रहे हैं आप? यहाँ लीव करें? Yes, you can leave the class. Now you can leave the class. Okay, thank you sir. ठीक है, thank you very much. All of you are permitted to leave the class.
Thank you very much.